Guys, good evening. ओके सो कल बेसिकली हमने टेस्ट क्लासेस शुरू किया है और टेस्ट क्लासेस का जितना भी बेसिक्स है दैट वी ऑलरेडी हैव अंडरस्टूड राइट कि हाउ मच कोड कवरेज is being required for a normal class for our triggers, and then how to see the test coverage of individual class, and then how to see the test coverage of all of the organizations and everything. That is what we have seen. So yesterday we have prepared one of the program. This was one of the program. I created a class with this. Let me open this class. That was maths operation utility. This was the class. Like, and for this class, I also have created one of the test classes also, right? I created a test class for this. See, within this class, there were the methods. Like, these are the methods: addition and the multiplication and the division, modulus. These all methods were having the return type as void. That means all of them were procedures. All of them were procedures. So no method, no method actually was returning something to us. No method was returning something, right? So that is one of the reason, that is the reason we could directly test it out just by calling the method name along with the class name. If your method doesn't returns anything, addition method was just performing the addition, it was trying to display the result, that's it. If you call this, if you call this from here, if you call this from here, if I write down like mass operation dot utility dot mass operation utility dot, if I call the addition method, and if I perform the addition of, and if I call this method, I give like three numbers, I give the three numbers, and if I execute the program, what is going to be happen? This method will be going to be called. It will going to perform the addition, and it will display me the result as to be 16. But then this method actually is not returning anything. This method, in fact, any of the method over here, whether it's an addition, multiplication, division, modulus, any of the method, no method is actually returning anything from here. And that is, that is why the reason, the return type of every method was void. So whenever any such kind of method that doesn't returns you anything, to perform the testing of that, what we could do, it's a very simple thing. Just call that method along with the your class name. That means class name dot method name, like we do it over here. Class name dot method name, like we do it over here. Whenever we call it from the execute anonymous window, the same is the process. Same is the process. You call it by giving the class name along with the method name, and then you require to give some of the sample data. This is how we actually call it from execute anonymous window. Same way we need to just call it, and the coverage, there will be 100% coverage. We are going to find it out. Now problem arises when the method actually returns something. When the method actually returns something, then how could we test it? Instead of void, if the method is returning something, if this method addition or multiplication or anything else, if it is returning something, then how to test that kind of method? That we are going to see it by today. That we are going to see it by today. So what was yesterday's program? I created a class with the name maths operation utility, and then I created few of the methods over here like addition and then multiplication, division, and the modulus. Now, one thing which was common in every method was an void. The return type was void. All of them were procedures. By the way, procedure doesn't return anything. Okay. So whenever we are required to test any procedure, we just require to call it. We just require to call it along with the whatever the parameters it requires. So if this addition method requires 3 integer parameters, I just require to send 3 integer parameters. That's it. If this method multiplication, if this procedure requires 2 integer as an parameter, when I'm calling this method, I just require to give 2 parameters, 2 integer numbers over there. That's it. So this was the method. This is the way that we have learned it yesterday. And this method of testing this method is used whenever you need to test such kind of methods. You just require to test the procedures. You need to, whenever you wanted to check such kind of methods but doesn't returns anything, whenever you require to perform the testing of the procedures, then we will follow this method. It's very simple. Just call these methods. How to call it? Give the name of the class name and then method name, class name and the method name. That's it. Okay. Now let me write down one of the program.
And for this program, let's see how can we I mean, I'm now using the functions. I'm now using the functions, and let's see how we can write down the test method, test cases for the functions. The difference between function and procedure is like your procedure doesn't returns anything. The function actually returns. Like whenever a function, a method is returning something, how to write down the test cases for that we are going to see. So let me create a class like common uh, utility helper, a common utility helper. With this name, I'm creating a class. Common की spelling गलत. Anyways, let's not concentrate on that. So, so here also I will be creating few of the method, but this time the method will not be a static, not be a public method, not be a procedure. Okay, it will be static method, but because I wanted it to be get called internally, but then, okay. So I'm actually creating one of the method like addition method, but this method will returning me integer. Okay, I'm creating a method with the name called as addition. What it is accepting? It is accepting two integer numbers. Okay, let's say it's accepting two integer numbers, integer x and then integer y. So this method will going to this method will going to accept two integer parameters, and what this method will return me, it will going to perform the addition, and it will be going to return me the it will going to return me the integer number. I mean the addition of these two. That is why the return type is not void. Actually it's what integer. And यहाँ पे मैंने integer दिया है, इसलिए यहाँ पे error आ रहा है. It is expecting us कि यहाँ पे कुछ ना कुछ return होना चाहिए. That is what I will be returning over here. तो मैं क्या return करता हूँ यहाँ पे? I'm just returning the addition of these two numbers. So I'm returning x plus y. I'm returning x plus y. That's it. Okay. So now this method addition first of all is a function. This is not a procedure. This method addition what now just I created, this method actually is a function. Why it's a function? Because it is returning something. What it is returning? It is returning an integer value. After performing the addition of these two integers, whatever you are going to give, whatever you are going to give, it's actually returning. It's actually returning the addition of these two number, and that is why the return type is also what integer. The return type is also integer. Let me create few more methods over here. Like example, public static. As for the multiplication also, integer public static integer multiplication. Okay, let's say it's accepting again it's accepting two or rather three parameters, integer y comma integer say z. Okay, so this method multiplication is actually what this method is accepting three parameters, and then what it's performing, it's performing the multiplication of these three parameter, and this is what it's returning. So it's actually returning x multiplied by y multiplied by z. This is what it is returning. It's returning an integer value. Okay. So this was about addition and multiplication. Let me try to do some of the operation with the your string data. अगर हमारा data string है तो उसके ऊपर क्या, तो मैं public static दो स्ट्रिंग कंपेयर करता हूँ तो बुलियन डेटा टाइप मिलेगा मेरे को, बुलियन. ठीक है, बुलियन फॉर एग्जांपल चेक इक्वल्स नाम से एक मेथड बना रहा हूँ मैं, एंड दिस मेथड विल गोइंग टू एक्सेप्ट टू स्ट्रिंग नंबर्स. फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग s1 एंड देन स्ट्रिंग s2. ठीक है, ये जो मेथड है ये दो स्ट्रिंग वेरिएबल्स, दो स्ट्रिंग वैल्यूज को लेंगे, एंड देन वी विल बी कंपेयरिंग दैट इफ s1 इक्वल्स टू s2. ठीक है, अगर दोनों सेम है तो देन रिटर्न ट्रू. ठीक है, देन रिटर्न ट्रू, बिकॉज मैंने बुलियन रखा है, रिटर्न टाइप क्या रखा है, बुलियन. बुलियन कैन ओनली एक्सेप्ट टू इंटीजर्स, टू थिंग्स, एक ट्रू या फिर फॉल्स. और अगर ऐसा नहीं है, एल्स इफ इट इज नॉट लाइक दैट, देन रिटर्न फॉल्स, देन रिटर्न फॉल्स. ठीक है, तो अगर दो स्ट्रिंग जो है सेम है, if the two strings are same, any error, else return false. Yeah, so now let me save this code. तो अगर ये दो स्ट्रिंग जो वैल्यू आपने दिया, इफ दे आर इक्वल्स देन रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स. ठीक है, लेट मी
try to create one more methods. Public static void, not void, public static. This time the return type will be string concatenate. Concatenate नाम से एक मेथड बनाता हूँ. इसको again I am giving two string s1 and then string s2. What I am expecting with this string कि मैं दो string दूंगा इसको, वो उसको concatenate कर दे. ठीक है, concatenate कर. So I need return s1 plus s2. जैसे hello और world दूंगा तो hello world मिला के दे दे. ठीक है, चलिए. So what I did, I actually created a class and I then created 4 different methods. Okay, all of them are functions. Why functions? Because every method is returning something. Addition is returning integer. The addition, whenever this method will perform the addition of these two integers, and it is going to return the result in the form of integer. Right. The second one is a multiplication method. It's actually accepting 3 integer parameters. It's trying to perform the multiplication of that, and the same value after the multiplication, what is the result, that is it's returning an integer value. The third one is your check equals naam se ek method, and that method is actually accepting 2 string parameter. It is going to check for whether these 2 string data is equal or not. If they are equal, then it's going to return true, otherwise false. And so I'm capturing this into what? A boolean data type I have defined. Then I also have defined one of the another method with a name called as concatenate. This is also accepting two string data s1 and s2, and we are concatenating like this, and we are returning a string. You know, after concatenation, it will also be a string. So I'm returning that string. Now, for this particular class, for all of these methods, let me write down the test class. Because for now, if I try to see the coverage of this, if now I try to see the coverage, let's go to the test. What is the name? Common utility helper. So I'll go with this C common utility helper. So no test coverage has been written because we haven't written any test classes, and that is the reason. That is the reason यहाँ पे आपको coverage नहीं show कर रहा है. That is the reason यहाँ पे आपको coverage show नहीं कर रहा है. So let me now write down the test classes for this. So मैं सबसे पहले इसको copy करता हूँ and then create a new apex class test. ठीक है, common utility helper test. With this name, I'm creating a class. So how a class could be defined as a test class? उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपको यहाँ पर एक annotation use करना पड़ता है is test. ठीक है. Now as soon as you save this code, यहाँ पर आपको run test का बटन आ जाएगा. ठीक है. As soon as you save this code, what is the observation that we have seen yesterday? यहाँ पर एक बटन create हो जाता है run test नाम से. ठीक है. So let me save this class first of all. See what happens. As soon as I save this, see the run test button यहाँ पे आ गया. चलिए, अब हमें methods लिखना है. Now we write down to we actually require to write down the methods for this. तो whenever we want it, अब देखो थोड़ा सा अलग है. कल से थोड़ा सा अलग रहेगा. मतलब प्रोसेस सेम रहेगी लेकिन थोड़ा सा एडवांस रहेगा. Because कल जो हमारी methods थी ना, they all were procedures. Why? Because the return type was void. It was not returning anything. If the method doesn't returns anything, then it is very easy to test. What you just require to call that method. How to call it? Give the name of the class name and method name. Class name dot method name. That's it. हो गया. तो अगर if the method is not returning anything, if the return type is void, then it is very easy to test. You just require in the test class, you just require to call that method. उसको आप method को call कर लो. If the method requires some parameters, उसके अंदर parameters है तो parameter दो. If it doesn't require any method, तो ठीक है, कोई जरूरत नहीं देने की, right? So the simplest form of testing is any such method that doesn't return anything. तो उसकी टेस्टिंग बहुत ही आसान है. अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया मैंने कि टुडे I am not actually trying to test the procedure, rather I am trying to test the functions. And let's now understand if we are testing the function. Functions are what? Functions are those kind of method that actually return something. Like addition is returning an integer value, multiplication is returning one integer value, check equals is returning boolean value, concatenate method is returning you the string value. Then how exactly we could test these methods? That is something new that we are learning right now. Okay.
By today, what we are learning, what is the difference between yesterday's lecture and today's session? That yesterday we have understood like how to just simply test the procedures. Those method that doesn't returns anything. They are very easy to test. You just require to call the method. If the method have some parameter, then supply those parameter. Then supply those while calling the method, just supply those parameter. If it doesn't require any method, it doesn't have any parameter, then don't supply it. You just require to call the method. Give the name of the class, dot, give the name of the method. That's it. Now let's understand how to test the functions. Okay. Here we will be using a first of all, let me write down the test method. Yesterday also we have written. We need to write down we need to follow this parameter. Static test method, that is very important. And this test method doesn't return anything, so it's void. And then you need to write down the test. You need to write down test and then whatever the method name. You could give any method name over here. You could give any method over. Okay. Let me follow the same process. इसको मैं copy कर लेता हूँ so that you could find this. This is something which we need to write it every time. Static test method void. Now give any name for this. तो जैसे कि test क्या ये common utility, common methods, ठीक है. Test common method, ऐसे मैं एक नाम दे देता हूँ उसको. And then this is my common test method. And every test cases I just require to write it over here. Okay, yesterday also we have taken this discussion. Okay, whatever you wanted to write down, just write down within this particular block. Okay, this is one of the common method. Yesterday we also did the same thing, right? I written this method. Within this method, I have called whatever the method I wanted to test one by one. That is what. So calling the test method one by one. That is also I am doing same thing over here right now. Okay, I will be calling every method one by one. That is also same thing I am doing this right now. चलो, तो अब मुझे एक एक करके फंक्शंस को कॉल करना है, जैसे एडिशन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर डिवीजन. And these are returning something. These are returning something. So I require to check कि मैं जो भी parameter, if I'm calling this method addition, for example, if I'm calling this method addition, if I'm calling this method addition, how could I call it? चलो, call करना तो बहुत आसान है. Yesterday we also learned. Give the name of the class, then give the name of the method. Give the name of the method, right? This method requires you to pass on two integer value. It's going to return you one of the integer. It's going to return you one of the integer. That means if I'm calling this method, I certainly require to give two parameters with this, right? I require to give two parameters. So, 1 second. So when I'm calling this method, right, I certainly require to give two integer parameters. So for example, let's say that I'm giving 100 and I'm giving 200. Okay, 200. If I'm supplying these two parameters, what ideally should be the result? 100 plus 200 is 300. And I also require to check this. See, calling this method is not sufficient. Calling this method is not just sufficient because this is a function. Function is returning you something. So you also require to take this discussion ahead. First thing, you need to call this method. How to call it? This is the way. Class name dot addition. This is also done. ये भी एक हो गया. But at the same time, when you are passing the parameter, you also require to check whether it's performing the correct addition or not. And if I at all I am giving this 100 plus 200, what should I get? I should get 100 plus 200 is 300. वो भी मेरे को check करना पड़ेगा. Then and then only two things I require to check over here. Yes. So when I am actually, when I'm checking this function, I need to check for two things. First of all, let's call this function. Because without calling we cannot check. So the first duty of R is to call the function. वो कैसे करते हैं जो हमने कल सीखा था. Class name dot method name. कल बस इतना ही कोड था हमारा. आज थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे. Because this is a function. This is a kind of method which is actually returning something. तो हमको ना result भी check करना पड़ता है. तभी we can say कि we have performed the 100% testing of this method. अगर आप सिर्फ कॉल कर रहे हो मेथड को एंड यू आर नॉट थिंकिंग कि अगर उसका रिजल्ट जो है वो भी हम देख रहे हैं, देन वी आर पार्शियली टेस्टिंग इट, नॉट फुल्ली टेस्टिंग इट. तो वो फुल्ली टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए वी आल्सो रिक्वायर टू टेस्ट कि इफ आई एम गिविंग 100 प्लस 200, आइडियली इट शुड रिटर्न मी 300, है ना, ये वैल्यू. तो वो कैसे चेक करते हैं, उसके लिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ डिस्कशन. तो यहाँ पर क्या होता है, देयर इज अ मेथड फॉर दैट. देयर इज अ मेथड, डायरेक्ट मेथड, नथिंग. System is a class, you know this. System dot assert. ठीक है, system dot assert.
एंड एसेट इक्वल्स लेना पड़ेगा मुझे, एनी एक्सपेक्टेड एनी एक्चुअल, void system any expected any actual. I need to go with this flavor. System dot assert equals लेना पड़ता है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल दो चीजें रहती हैं यहाँ पे। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज लाइक कि जो एक्चुअल पार्ट है ना, एक्चुअल में मैं ये पूरा कोड यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, ये एक्चुअल से इसको रिप्लेस कर दे, ठीक है। दिस इज एक्चुअल, I am sub and this is what this is the method that I'm calling, and I'm actually I'm actually providing these two data as a parameter. Now what is expected when you are giving this, when you are giving 100 and 200 to this particular method, what you are expecting that we need to write it over here. So I am expecting as what 300, I'm expecting as what 300. I'm expecting ki after calling this method, when I'm giving this method of this particular class, I'm giving this two data 100 and 200. So ideally it should perform the addition and it should give me the result. So system dot assert equals will going to check this method of system class assert equals will going to check whether after performing this operation are you getting this result or not. After performing this operation, that means after calling this method along with this data, are you getting this or not? That is what the duty of system.assert equals to. Okay, that is what the system.assert equals to. Now you could try it with another data also. That means ऐसा नहीं है कि आप इसी से try करो. You could even call it with another data. Let's give like 900 plus 700. Okay, 9 plus 700. Ideally, how much I should get? I should get 1600 at that time. ठीक है, I should get 1600 at that time. That is what 9 plus 7 is 16, right, है ना। तो ये आप जितना अलग अलग डेटा भी देना चाहो तो उससे से भी ट्राई कर सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि आप एक ही डेटा के साथ में ट्राई करो उसको। चलो इसी तरह से मैं बाकी मेथड्स भी आई कुड कॉल। दूसरी मेथड कौन सी मेरी, मल्टीप्लिकेशन है। माय सेकंड मेथड इज मल्टीप्लिकेशन। सो लेट मी ट्राई टू क्रिएट सिस्टम डॉट असर्ट इक्वल्स, उसके लिए भी मैं बना लेता हूँ system dot assert equals, and here community dot multiplication. Now multiplication is actually expecting three integers, right? It's expecting three integers. Okay, 3 integers expected as well. So these three integers, and like I'm giving 100 multiplied by 2, and then for example 10 multiplied by 2 multiplied by 3. What will be this result? 10 plus 10 plus 2 is 20, 23 is 60. Yes, I will be expecting 60 over here. ठीक है, इतना आना चाहिए। दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। ठीक है, ये हो गया मेरा दूसरी मेथड। लेट मी ट्राई इट विथ अनदर मेथड, सिस्टम डॉट assert equals to, the next method is like you have the next method, for example check equals. Now this method is asking you, this method is asking you what? It's asking you to enter two strings, right? And what is the return type? What is the return type of this method? Equals the return type of boolean. Okay, boolean. So I'm supplying two strings. Whenever we are supplying a string, it must be enclosed within what? Single inverted comma, है ना? It must be enclosed within single inverted comma. So example, welcome, welcome. Okay, and let me copy the same thing. As in string 2 also I'm giving the same data, string 2. तो अगर मैं दोनों स्ट्रिंग एकदम सेम दे रहा हूँ तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, क्या रिजल्ट आना चाहिए मुझको? इफ आई एम गिविंग द सेम डेटा, आई एम एक्सपेक्टिंग द रिजल्ट एज टू बी ट्रू, मुझे ट्रू मिलना चाहिए। अगर मैं ऐसा नहीं दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे दोनों यूज केसेस बनानी पड़ेगी ना, आई मस्ट गिव द बोथ ऑफ द यूज केसेस, फॉल्स वाली भी यूज केसेस बनानी पड़ेगी। तो इसलिए मिसिंग, हाँ ये ओपन ब्रैकेट के लिए क्लोजिंग नहीं करेगा, हियर आल्सो इस ओपनिंग के लिए क्लोजिंग नहीं थी, ठीक है। Anyway, तो अभी देखो, if I'm making certain changes over here, for example, instead of the two strings are like welcome and hello. Now these two strings are not equal. Check equal. These two strings are not equal. If I'm executing with this case, I should get false. ये जो मेरा function है, ये वाला function check equals. If I'm supplying these two strings to this,
दिस फंक्शन इट मस्ट रिटर्न मी फॉल्स, तो वो मैं चेक कर रहा हूँ सिस्टम डॉट असर्ट इक्वल से कि अगर मैं ये डेटा सप्लाई कर रहा हूँ, अगर ये डेटा बाय द वे ये डेटा सप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे ट्रू मिलना चाहिए। लेकिन अगर मैं दो अलग अलग स्ट्रिंग दे रहा हूँ तो इट मस्ट रिटर्न मी फॉल्स, ये मैं चेक कर रहा हूँ, किससे चेक कर रहा हूँ, एसर्ट इक्वल से, ठीक है। एंड देयर इज वन मोर मेथड, चलो देयर इज वन मोर मेथड, लेट्स गो विद दैट। व्हाट इज दैट मेथड? concatenation, ठीक है। concatenation is also asking two string values, concatenation is also asking two string values, दो string values ask पूछ रही है। तो वेलकम वेलकम अपेक्स, ठीक है। नाउ व्हाट शुड बी द रिजल्ट आइडियली, क्या रिजल्ट आना चाहिए अगर मैं दोनों स्ट्रिंग को कंबाइन कर देता हूँ? इफ आई एम कंबाइनिंग दोनों स्ट्रिंग तो मुझे आइडियली क्या मिलना चाहिए, वेलकम, और उसकी कंटिन्यूटी में मिलना चाहिए अपेक्स। दिस इज व्हाट आई शुड गेट, आइडियली दिस इज व्हाट आई शुड गेट, राइट? एंड दैट्स व्हाई आई एम रिटर्निंग दिस, नो दैट्स व्हाई आई एम रिटर्निंग दिस। सो लेट मी नाउ सेव दिस, चलो अभी सेव कर दिया है तो अभी रन टेस्ट करेंगे, ठीक है। रन टेस्ट करने के बाद में वी विल बी सीइंग कि हमको क्या रिजल्ट है। लेट्स रन दिस टेस्ट। टेस्ट तो सक्सेस हो गया है, टेस्ट सक्सेस हो गया है, तो टेस्ट सक्सेस होने के बाद में लेट्स गो टू दी टेस्ट एंड देन आई विल शो यू वन मोर एरिया जहां से आप टेस्ट का रिजल्ट देख सकते हो, ठीक है। क्या थे मेथड आपके, कॉमन यूटिलिटी, सी डबल ओ। नाउ सी 100% टेस्ट कवरेज दिया है, क्यों? क्योंकि सारी मेथड्स कवर किया है, ठीक है। 10 आउट ऑफ 10, आई डोंट नो हाउ 10 10 आउट ऑफ 10 क्यों दिया इसने, 10 तो मेथड नहीं है, 10 यूज केसेस है कि 1 2 3 4 5 6 तो यूज केसेस है। लाइंस को गिना के शायद, तो इसने शायद लाइंस को गिना इसलिए, हाँ 10 आउट ऑफ 10 लाइंस दिया। ठीक है, मैं एक जगह से और बताता हूँ कि हाउ एक्चुअली दिस टेस्ट हैज बीन रन, ये टेस्ट कैसे रन हुआ है, ठीक है। हम्म, सी, तो दिस वन मोर वे टू सी कि आपने जो क्लास बनाई है उसका कवरेज कितना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि आप ये पर्टिकुलर, ये जैसे आपने ओपन किया और आपने कौन सी क्लास को चेक किया है कि यू विल बी चेकिंग दिस क्लास कॉमन यूटिलिटी हेल्पर को, ये क्लास को आपने टेस्ट कर रहे हो, तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पे जितनी लाइंस ब्लू में आ जाती हैं उसका मतलब ये होता है कि दीज लाइंस हैव बीन टेस्टेड, और जो नहीं है वो रेड में आता है, यहाँ पे जो नहीं है वो रेड में आता है। ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सी दैट इज द रीजन यहाँ पे 10 आउट ऑफ 10 आ रहा है, क्योंकि ये मेथड्स को नहीं काउंट कर रहा है, ये एक्चुअली इट्स काउंटिंग दी नंबर ऑफ लाइंस, और सारी लाइंस यहाँ पे कवर की है हमने, दैट इज द रीजन। तो ये भी एक और तरीका होता है ये देखने के लिए बड़ी क्लासेस में कि कौन कौन सी क्लास कवर हुई है और कौन सी क्लास कवर नहीं हुई है। तो हाउ यू एक्चुअली रिक्वायर टू डू दिस, अभी जैसे मैथ्स ऑपरेशन यूटिलिटी पे जाता हूँ मैं, अगर इफ आई वांटेड टू सी कि ये जो क्लास है, ये हमारी क्लास है, इसमें कितनी मेथड्स हमने कवर की है, तो मैं क्या करूंगा, आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट दिस मैथ्स ऑपरेशन यूटिलिटी, मैथ्स ऑपरेशन यूटिलिटी में जाता हूँ, मैथ्स ऑपरेशन यूटिलिटी, एंड देन आई विल मेक अ डबल क्लिक ओवर हियर, ठीक है। जैसे ही मैं डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हाईलाइट हो जाता है कि कौन कौन सी जो लाइंस है वो आपकी कवर हुई है। तो यहाँ पे ये इट्स टेकिंग 4 मेथड्स, तो ठीक है, मेथड्स बता रहा है वो, दैट्स द रीजन, एक्चुअली वो मेथड्स को हाईलाइट कर रहा है, नो, दिस इज व्हाट द रीजन। तो यहाँ पे मेथड इसलिए बिकॉज देयर इज नो रिटर्न टाइप, और यहाँ पे रिटर्न है, इसीलिए लाइन बाय लाइन ले रहा है। तो फंक्शंस, प्रोसीजर्स, जब आप टेस्ट करते हो तो प्रोसीजर्स में मेथड पे फोकस रहता है, और जब आप फंक्शंस को टेस्ट करते हो तो लाइन बाय लाइन आपको ये फोकस लाइन बाय लाइन मिलता है। ये एक चीज थोड़ा सा ख्याल रखना, बस और कुछ नहीं। चलिए एक तरीका और बताता हूँ इसको देखने का। अब ये तो हमारा डेवलपर कंसोल हो गया, यू कैन ऑल्सो सी दिस फ्रॉम यूजर, आपका यूजर इंटरफेस से भी देख सकते हो। व्हाट यू कैन डू, गो टू द बिल्ड मेनू एंड देन डेवलप में जाओ और क्लासेस में जाओ, देन ओपन दैट पर्टिकुलर क्लास, जैसे हमने बनाई अभी कॉमन सी डबल ओ वाली, कॉमन की स्पेलिंग जिसमें गलत हुई, कॉमन यूटिलिटी हेल्पर है ना, ये क्लास बनाई है मैंने, यू नो। तो दिस इज व्हाट द क्लास, अभी तो टेस्ट कवरेज इसका पूरा पूरा दिख रहा है। ट्राई दिस विद सम अनदर क्लास, डीएमएल यूटिलिटी है, नो नो नो,
मैं गलत कर रहा हूँ, कॉमन यूटिलिटी हेल्पर टेस्ट, ठीक है। तो मुझे टेस्ट क्लास ओपन करनी पड़ेगी एंड देन देयर इज अ बटन ओवर हियर। टेस्ट क्लासेस में जाना पड़ेगा आपको, कॉमन यूटिलिटी हेल्पर की टेस्ट क्लासेस में यू हैव अ बटन ओवर हियर, यू नीड टू क्लिक दिस बटन रन टेस्ट। यहाँ से भी होता है, यहाँ से भी होता है, नो थैंक्स। ठीक है, यहाँ से भी आप कोड रन आप टेस्ट रन कर सकते हो। तो सी द टेस्ट इज रनिंग एक्चुअली, आप देख रहे हो प्रोसेसिंग लिख के आ रहा है, द टेस्ट इज एक्चुअली रनिंग। और जब ये हो गया, when it's being done, तो यहाँ पे स्टार मार्क आता है। अब इफ यू वांटेड टू सी द रिजल्ट तो आप व्यू पे क्लिक करो, तो जैसे ही आप व्यू पे क्लिक करते हो, what happens? Now I need to make a double click. I think I need to make a double click. ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे उसका रिजल्ट आता है पूरा। ठीक है, मैं एक बार चेक करता हूँ ये इंटरफेस कैसे काम करता है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा बिकॉज मोस्टली यहाँ पर आते नहीं, हम लोग यहीं से कर लेते हैं इसको, इसलिए मैं भी शायद भूल गया हूँ। एक और बार ट्राई करता हूँ कि ये इंटरफेस कैसे काम करता है। कॉमन यूटिलिटी हेल्पर टेस्ट, एंड इफ आई रन द टेस्ट, सिलेक्ट ऑप्शंस में क्या है, नहीं, ठीक है, स्टेटस। कुछ तो भी गड़बड़ है यहाँ, कुछ तो भी है जो मैं लोकेट नहीं कर पा रहा हूँ। एनीवे ठीक है, वहां से नहीं देखा तो भी चलता है, वैसे बेस्ट तरीका तो यही है, डेवलपर कंसोल से ही देख लेते हैं। ठीक है, सो डू द प्रैक्टिस ऑन दिस। कल मैं इसके आगे लेके जाता हूँ। अभी ये दो मेजर चीजें आपने पढ़ी है अब तक। एक तो प्रोसीजर्स को, मतलब ऐसे ऐसी मेथड दैट डजंट रिटर्न्स एनीथिंग, उसको कैसे टेस्ट करना, जो कि बहुत सिंपल तरीका है। दूसरा, ऐसी मेथड दैट एक्चुअली रिटर्न, ना फंक्शंस को उस तरह की मेथड विच इज एक्चुअली रिटर्निंग समथिंग, तो उसको कैसे टेस्ट करना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, दो चीजें हैं। एक तो मेथड को कॉल करना, जो जो कि कॉमन है, जो कि हमने कल सीखा था, मेथड को कॉल करना, वो भी करना है आपको। देन यू अलोंग विद द पैरामीटर्स जो आप सप्लाई कर रहे हो, आपको ये भी देखना है कि इसका रिजल्ट क्या होता है, व्हाट इज द रिटर्न टाइप इज इंटीजर। तो अगर इफ यू आर गिविंग दिस, तो दिस शुड बी आइडियल आउटपुट। तो वो कैसे चेक करते हैं, विद द सिस्टम डॉट असर्ट इक्वल्स इज दैट मेथड, which with we can check the outcome of this particular method. If this method is being called with these many procedures, if this method is called along with these parameters, so this should be ideally is the result what we are expecting from this method, right? That is also be required to check. तो उसके लिए आपका कौन सा मेथड होता है, it's system dot assert equals, it's a ready made method. You just required to understand कि how this method actually works, right? सो हैव अ प्रैक्टिस ऑन दिस। कल मैं आपको आगे लेके चलता हूँ विद द ट्रिगर्स एंड एवरीथिंग, ट्रिगर्स को कैसे टेस्ट करना, फिर उसके बाद हम देखेंगे बैच प्रोग्रामिंग कैसे टेस्ट करना। तो इस तरह से दो दो तीन तीन चीजें हैं वो निपटा लेते हैं, एंड देन वी विल बी डायरेक्टली स्टार्टिंग विद द विजुअल फोर्स प्रोग्राम। ठीक है, चलो, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ